All right. So now, since we are now done with biological molecules, we are just doing few past papers, and then we'll begin with enzyme in the other half of the class. All right. So this is a very easy question, and it is saying that name and describe the cell structure in which the synthesis of triglycerides and other lipids takes place. So first, we need to understand that there are 3 marks for this question, right? So 1 mark is definitely for naming the cell structure. And the other 2 marks are to describe that cell structure. Okay? So they're not asking you about the process, that how lipids are made or something like that. Okay, so we need to be comprehensive within our scripts, that 1 mark is for naming and other 2 marks are to describe that cell structure instead of describing the process. So let's not try to be very over efficient and mention how triglycerides are made. Rather, let's just stick to what the question is asking. Okay? So, all right. So, where exactly or which cell structure is exactly responsible for the synthesis of lipids? Smooth endoplasmic reticulum. Excellent. Smooth endoplasmic reticulum is responsible for the synthesis of triglycerides and all the other lipids. And right, that this is a membranous structure. It is membrane bounded, right? Membranous. And what else can you write? It is membranous and it is not associated with ribosomes, right? No ribosomes. So up till now, will I now get 3 marks on this? Yes, I will get 3 marks if I'll write this in proper passage instead of these words. So I'll get 3 on 3. But just for your additional information that this structure is membranous, it does not have ribosomes. And one more thing that you can write is that it has cisternae. We already studied about it, right? So it has cisternae. So I have now described the entire cell structure that is responsible in the synthesis of triglycerides. All right? मिस ये जो सिस्टर ने है ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है. जी माइटोकॉन्ड्रिया में भी होती है. चलें. To measure the activity of the bacterial lipase during their investigations, the researcher used a method based on the biological test for triglycerides. Outline a biological test that could be carried out to show the presence of triglycerides in a liquid mixture and describe the positive result for this test. So this is a very easy question, I believe, and you should not find it difficult to answer. So what exactly should I write? मिस Also, हम 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सैंपल लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं 2 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एथेनॉल के साथ. hmm, फिर ये क्लियर सॉल्यूशन बन जाता है. फिर हम कुछ ड्रॉप्स डालते हैं वाटर की. अगर प्रेजेंट होते हैं फैट्स तो वाइट इमल्शन सॉल्यूशन अपीयर होगा. और अगर नहीं excellent. तो फिर वो क्लियर ही रहेगा. ठीक है बिल्कुल टू द पॉइंट एंड वेरी रेलेवेंट आंसर. तो यही हम जो है उसमें लिखेंगे दैट you'll take 2 centimeter cube of sample, you'll add 2 centimeter cube of alcohol or ethanol. ठीक है स्लैश लगा के you can write it. And what else? That then you'll mix it up. Okay, so you need to be mindful in writing all the details that were mentioned in the slides in order to get 3 on 3. You'll mix it and then you'll add few drops of water. Few drops of water. And the positive result will depict the formation of emulsification. Few drops of water. And then we'll get emulsification. White layer on top. Okay, you can also write white layer on top, or you can also write that an emulsification is seen on the top of the test tube. White layer. Okay. Oh yes, this is a very good question.
As a result of transcription and translation, forget about these words. We have not covered these words as yet, since these are in your chapter 5. We'll do it. A polypeptide chain is produced. Proteins with quaternary structure show or contain two or more polypeptide chains. An antibody molecule and a hemoglobin molecule both show quaternary structure. Table 6.1 shows some features of an antibody molecule and a hemoglobin molecule. Complete table 6.1 to produce a summary of the features of the two molecules. I'll also suggest that you make this table in your notes. It's a very summarized and very good concept-based table. So yeah, try to make it in your notebooks as well. Antibody and hemoglobin. Their features include are whether they are fibrous or they are globular. So antibody should be fibrous or it should be globular. Fibrous. No, antibody is supposed to be globular. Fibrous, you have collagen in fibrous proteins. Mm, Fibrous means that it has lots of fibers and it's responsible to provide structure, while antibodies and hemoglobin, both of them are not responsible to hold your structures, right? They are structures in themselves, and both of them are globular because they do not have fibers within them. Okay? ठीक है. All right. So now number and names of the polypeptide chain. We discussed the number and names of the polypeptide chains of hemoglobin. Can you remember? इसमें 4 होती हैं. Four total होती हैं, all right. And 2 light and 2 heavy. two alpha and two beta. Yes, Okay? beta. Two हाँ alpha हाँ. and two beta. So two heavy and two light chains are of antibodies. Okay? So do not get confused. And there are two beta. Okay? This is why I'm suggesting you to draw this. Or you can just take a screenshot and draw it afterwards. Then this is very important question. That okay, but since you are not aware of the antibodies right now, we'll do this in immunity. But for now, I'm telling you that antibodies have disulfide bond. I guess the kids do get confused in this question a lot of times. So it's better if you just write it with you and you can make thorough revisions by the end. Disulfide bond. All right, shall we move on? Yes. Okay, so here comes that question which I have emphasized many times, that it shows two amino acids. This is amino acid 1, this is amino acid 2. And you need to show how a peptide bond is formed between these two amino acids. So I'll remain a bit, I'll draw this in a summarized manner, but try to draw it in a complete manner when you are making it. Okay, I'll also suggest that make this in your notebooks as well. Okay, so this is the carboxylic group of one amino acids and the amino group of the other amino acid. And now what am I supposed to do? Mistake OH from C double bond OH and H from N group. Mhm. So, and what exactly this molecule is? Water, H2O. Water, H2O. So we'll remove water in order to form a peptide bond between carbonyl group. Now this will be known as carbonyl group and an amine group. Okay, so this is how you make your peptide bond. So you label Yes. this as well. G. ये linkage ester नहीं होगी. Ester linkage is between is it happens between the fats. Okay, peptide bond जो है वो आपकी इधर होती है. Ester bond is COC. COC. So we cannot see COC over here, right? COC अगर बनता, so this is an ester, but this is a peptide bond. And ester bonds are always made in lipids. Okay? Yes. Peptide.
All right. So this is a very important question and it often comes for biological molecules. Figure 1.1 shows 5 biological molecules. Okay. This is the first biological molecule. And the question about this is that state the name of the bond in molecule A indicated by the arrow. So I'm expecting that you can give this answer by now. Which bond is this? Uh, This is very easy. Come on. This is a ये सभी glycosidic bond. बॉन्ड कैसे कंफ्यूजिंग है, सिंपल सी तो बातें हैं. लिस्ट इतने अब ज्यादा हैं वो याद करने के लिए। देखें, जो एस्टर बॉन्ड होता है वो कहाँ बनता है, अभी बताया था. एस्टर बॉन्ड इज मेड इन लिपिड्स. ठीक है. यस। एल एस्टर बॉन्ड इज मेड इन लिपिड्स. पेप्टाइड बॉन्ड इज वेरी इजी टू रिमेम्बर दैट पेप्टाइड से प्रोटीन्स आपके दिमाग में आना चाहिए. ठीक है. सो पेप्टाइड बॉन्ड इज मेड इन प्रोटीन्स. And then you have this glycosidic, which is also very easy to remember. By the end, you'll be able to remember it thoroughly. I can imagine the amount of confusion you are going through right now, and it's completely okay because this is the brand new information that you're getting. So glycosidic say you can remember G. Okay, LPG. If you remember LPG, so LPG is lipids, proteins, and glucose. For some reason, you can remember that carbohydrates have this glucose. Okay, so LPG and peptides. Peptide bond is made in proteins. Glycosidic is made within glucoses, and ester bond is made between lipids. Okay, so just write this somewhere in your notebook on some corner side, and inshallah by the end ho jayega. Don't worry. All right. Molecule B is described as a saturated fatty acid. State why molecule B is described as a saturated fatty acid. So you remember that what is the difference between saturated and unsaturated molecules? They're saying that this molecule is saturated in nature. How come? Miss, they have a single bond. They have single bond, exactly. So you'll write that no double bond is seen in the hydrocarbon chain, and this is it, because I believe this is a 1 mark question. So yeah, this is a 1 mark question. You can write that there are no double bonds. Write complete word bond, double bonds. Don't write is equals to. Who's doing it? Do it quickly. Molecule D is a polymer. State the name of the monomer that is used to synthesize this polymer. Molecule D. So this, they're saying that this is a polymer and you need to figure out the monomer of this particular molecule. थोड़ा सा deeply analyze करें. It's not very difficult. Miss, glucose. State the letter of the molecule that could be formed during the hydrolysis of a polypeptide. State the letter of the molecule that could be formed during the hydrolysis. Hydrolysis is responsible for breaking the molecule or for forming. For breaking. ठीक है. So during hydrolysis of a polypeptide, which molecule can be made? Polypeptides. तो अगर हमने हाइड्रोलिसिस की थी, हाइड्रोलिसिस में ब्रेक डाउन हो रहा था, तो कुछ ब्रेक डाउन में ये मॉलिक्यूल बन सकता है ना, बिकॉज इसमें अमाइनो ग्रुप है. मेक सेंस? Yes. ठीक है. और ये आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई भी अगर करें तो ये आपका अमाइनो एसिड ही दिया हुआ है, बट इन अ खौफनाक वे. मैं आपको बताती हूँ. देखिए NH2CH, राइट? CH ऊपर ऐसे ही होता था ना, और नीचे R ग्रुप लगा हुआ होता था. सो बेसिकली इन्होंने R ग्रुप दिया हुआ है, एंड R ग्रुप मीन्स एनी लेंथ ऑफ कार्बन हाइड्रोजन. ठीक है. सो दिस इज योर R ग्रुप जो कि नीचे लगा हुआ होता था. दिस इज योर CH जो ऊपर होता था. फिर COO, एंड यहाँ पे OH होना चाहिए था. तो बेसिकली दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल ग्रुप एंड NH. दिस इज अ वेरी, मतलब अगर आप देखना चाहें तो टेक्निकली उन्होंने आपको ड्रॉ करके दी हुई है डायग्राम.
ऊपर नीचे करके, बिकॉज बच्चे इसको देख के फौरन घबरा जाएंगे। बट घबराना नहीं है, आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड भी करें कि ये चीजें तो बिल्कुल भी नहीं बन सकती थी। एंड अनदर वे टू आइडेंटिफाई इज कि ये है ही अमाइनो एसिड। तो ये अमाइनो एसिड है, अब जाहिर सी बात है जब इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे तो यही बनेगा ना, मतलब ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, उन्होंने दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन करके दिए हैं। जब ब्रेक डाउन होगा तो यही बनना चाहिए, इसका अमाइनो एसिड ही बनना चाहिए, राइट? मेक सेंस? यस। यस समझ आ रही है? जी, मैं सहारी। ओके, ठीक है। State the letter of the molecule that forms part of the cell surface membrane of eukaryotic cells. ये तो आप लोग इजीली बता देंगे। सेल सरफेस मेम्ब्रेन का कौन सा यहाँ पे हमें बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल दिया हुआ है? फैटी टेल। सॉरी, फैटी टेल। फैटी टेल कौन सी वाली लेकिन? और बी? बी है या ई है, किस कौन सा वाला है? बी, आई गेस। बी। यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में एक लेयर होती है हमारे पास फैटी एसिड की। नौ मस्त तो होती दो होती है ना, तो फिर दो वाली कहाँ नजर आ रही है? ई में। ई में। यस, ठीक है। Molecule A and molecule C dissolves in water. Molecule B does not dissolve in water. Explain why molecule A and molecule C dissolve in water, but molecule B does not dissolve in water. 1 marks है, very simple. Molecule B जो है वो आपका dissolve नहीं हो रहा पानी में, but A और C हो रहे हैं। इसका बहुत अच्छा आंसर मुझे चाहिए। B मिस क्या है? ए फैट्स हैं जो कि सोल्यूबल नहीं होते और दे आर हाइड्रोफोबिक। Exactly. So they are hydrophobic and they are water insoluble. Excellent. तो समझ आ रही है किस तरीके से आंसर्स होंगे? यस ठीक है। मिस, इसमें हम ए और सी का नहीं लिखेंगे, वो क्यों नहीं होंगे? ये 1 मार्क का है ना, तो 1 मार्क के लिए आपने सिर्फ ये बताना था। इन्होंने आपसे पूछा था कि मॉलिक्यूल बी को इन्होंने इतना सिग्निफिकेंटली बोला है ना, डज नॉट, इस पे उन्होंने बोल्ड करके दिया हुआ है। बट अगर आप ए और सी का बताना चाहें तो आप बता दें। ए और सी का आप क्या बताएंगे? मिस वो वाटर लविंग होते हैं और सॉल्यूबल हाइड्रोफिलिक होते होते हैं, वाटर हैं। सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, एक्सलेंट। तो आप बताएंगे तो आपको मार्क्स जो है वो, वैसे इस जगह 1 मार्क की है, पर अच्छी बात है इफ यू वांट टू आंसर इट वेल। मिस शायद डिस्टिंक्शन आ जाए अगर वो इंशाल्लाह। लिखे। ठीक है। सो आई पोस्ट फ्यू क्वेश्चंस फॉर योर होमवर्क एज वेल, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिसमें the more you practice the better you get. And I want कि सबके जो है वो, अब जो नेक्स्ट टेस्ट होगा, अब आई थिंक 3 चैप्टर्स का कंबाइन हम टेस्ट लेंगे, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का, एंजाइम्स का एंड माइटोसिस का। तो आई वांट कि अब सबके जो है ना वो बहुत अच्छे नंबर आए, बिल्कुल हाईएस्ट वाले, किसी के भी कॉम्प्रोमाइज नंबर्स ना हो। सो आई पोस्ट द होमवर्क, ट्राई टू अटेम्प्ट इट एंड सेंड इट ऑन द ग्रुप एज वेल, ठीक है? बेनिफिशियल। सो हाँ, इसको ना थोड़ा अच्छे से देखिएगा। You need to complete this table to produce summary of some named biological polymers. Amylose है, we studied about amylose and we know कि इसका monomer is glucose. Now they're asking you about the bond between these monomers. So which bond is present in glucose? अभी बताया? ग्लाइकोसिडिक। ग्लाइकोसिडिक, एक्सलेंट। ठीक है, तो ये आसान सी बात हो गई कि इसमें ग्लाइकोसिडिक है। दूसरे वाले में क्या दिख रहा है आपको? दूसरे वाले में भी कुछ ग्लाइकोसिडिक वाली बात आनी चाहिए या कोई और आएगी? मिस ग्लाइकोसिडिक ही है कि। उस्मान अगर बोले कि यहाँ पे पेप्टाइड को लगा दें तो नो मिस। ऐसी बातें तो नहीं बोलेंगे ना, यहाँ पे भी ग्लाइकोसिडिक ही आएगा, ठीक है? अच्छा जी, सो नाउ कोलेजन है। कोलेजन इज अ फिब्रस प्रोटीन, ठीक है, और इसके पास पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। अब उन्होंने आपसे उल्टा करके पूछ लिया, नाउ दे आर आस्किंग यू अबाउट द मोनोमर। तो सिंस वी नाउ नो दैट कोलेजन प्रोटीन है कि नहीं है? यस मिस, प्रोटीन है। पक्की बात है, फैट तो नहीं है? नो नो। ठीक है, तो प्रोटीन का मोनोमर कौन होता है? प्रोटीन का मोनोमर अमीनो एसिड्स।
यस, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, एक्सलेंट। अच्छा जी, सो डीएनए का भी अभी आप लोगों को एट दिस पॉइंट नहीं पता होगा, व्हाई? बिकॉज हमने अभी डीएनए का टॉपिक नहीं करा। टॉपिक मींस चैप्टर नंबर 5 है, विच विल डू। पूरा चैप्टर है तो अच्छे से हो जाएगा। पर एट दिस पॉइंट आई एम जस्ट टेलिंग यू ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं जो आप लास्ट मिनट के नोट कहीं अगर बना रहे हैं टेबल्स वगैरह, तो उसमें प्लीज अपने पास ये अच्छे से मेंशन कीजिएगा, बिकॉज ये वो क्वेश्चन हैं जो रिपीटेडली आते हैं। एंड इट्स गुड इफ यू हैव द आंसर्स पहले से ही। तो इसका होता है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर नाम बहुत खौफनाक है, बट डू नॉट गेट स्केयर्ड, क्योंकि ये अभी हमने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट फॉर यू टू मेक अ लास्ट मिनट के नोट्स। अच्छा जी, देन वी हैव ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, तो इसका मोनोमर कौन होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। एंड पर्टिकुलरली अगर हम और पर्टिकुलर होकर लिखना चाहें तो अल्फा ग्लूकोज। अगर यही बात मैं आपसे पूछूं फॉर सेलुलोज, तो आप सेलुलोज में कौन सा मोनोमर बताएंगे, अल्फा ग्लूकोज या बीटा ग्लूकोज? बीटा ग्लूकोज। बीटा ग्लूकोज, एक्सलेंट। ठीक है, so it's 5:46, let's go on a mass break and then we'll begin with enzymes. ठीक है, ठीक है। all right.